जब हम यहाँ ज्वाइन किए तो हमको सब कुछ चार्ज में मिला, लेकिन चाबी और रूम नहीं मिला। वहाँ कोई और माने चाबी ताला लिए हुए थे, मांगे भी एक दो बार तो कहें कि नहीं सही सरकारी है, थोड़े ये हम लोग के लिए है, एकदम ऐसी साफ शब्दों में कहें। पूरा फर्श टूटा हुआ था और जो दीवार जो है सब बिखरा हुआ था, सीढ़ी खत्म था, खिड़की पूरा बिगाया हुआ था। और उसी का मरम्मती के लिए यहाँ पर एक गांव ग्रामीण जनता सब आए और कुछ लोग बाहर से आए, एक कमेटी बनाया गया सर। मीटिंग में वार्ड सदस्य, एएनएम मैनेजर साहब, ग्राम के आव वासी लोग सब मिल के मीटिंग की है। उसमें निर्णय लिया गया कि नहीं, स्वास्थ्य उपकेंद्र जो टूटा है वो बनना चाहिए। इमामगंज हम लोग गए, वहाँ तो डॉक्टर साहब से बात किए, हेल्थ मैनेजर साहब से बात हुई और बोले कि भाई 10,000 रुपये की राशि है और बाकी जो है से गांव का जनता सहयोग करके इस स्वास्थ्य केंद्र को बनाएंगे। अपने से सब 4 को 5 को मिल के उसको फर्श को तोड़ें, मिस्त्री लगाएं, इस तरह से ला के करके सब सहयोग किए इस तरह के। जो सेंटर बरसों से बंद थी उसको ये लोग हेल्प कर उसको चाबी भी दिलवाए और मरम्मत में हेल्प किए। अच्छा सेंटर कंप्लीट हो गया, उस पर काम बढ़िया से होगा। This is just one example of the changes brought about by community monitoring, an important component of the National Rural Health Mission, NRHM. The mission aims to improve health services across 18 high-focus states. NRHM was launched by the Ministry of Health and Family Welfare in 2005. As a result of community monitoring, health centres have reopened, people have better access to medicine and care, and are demanding health services. The National Rural Health Mission aims to strengthen the primary health system in the state. It also has to ensure that our delivery of healthcare services has to be as per a certain benchmark. Therefore, NRHM framework very clearly envisions, three sort of pronged accountability framework. So we have one source of information, that is health management information system. We have an external sort of validation through periodic surveys, but we have a third and a very important dimension of this accountability framework, and that is community monitoring. To promote community action, the Ministry of Health and Family Welfare constituted the Advisory Group on Community Action, AGCA. Population Foundation of India, PFI, hosts the Secretariat of the AGCA. With support from the ministry, the AGCA guided the implementation of community monitoring in 36 districts across 9 states between 2007 and 2009. This pilot program rolled out and made a blueprint for how communities will be engaged, involved, and participate in NRHM. This program was then evaluated by external experts. The key recommendation in that report was that this should be rolled out across the country. Community-based planning and monitoring, CBPM, was introduced in Bihar in May 2011, covering 300 villages spread over 10 blocks in 5 districts. PFI has been facilitating this process in partnership with 13 district and block level organizations. We looked around and we zeroed it on PFI. PFI has had good experience in running these programs in other states. We invited PFI and the State Health Society in Bihar. We have signed a MOU with them. यहाँ बिगड़ल चापाकल कौन कौन है? बिगड़ा हुआ चापाकल यहाँ पर है। कुट्टी के बगल में भी बिगड़ा हुआ चापाकल है।
CBPM begins with the Know Your Village exercise, followed by the formation and strengthening of committees at the village, block and district levels, as well as training committee members, the community and service providers on the planning and monitoring process. Communities are made aware of their health rights through Kala Jatha performances, citizens' charters and wall writings. Now that the ground is set, community inquiry is conducted, especially with women and marginalized groups. The data is then compiled to prepare a village health report card. Services are ranked into 3 categories: green for good, yellow for average, and red for poor. Rankings are validated by the larger community and the final results shared with frontline workers to identify specific roles, responsibilities and timelines to rectify gaps. At the primary and sub-health center level, surveys are conducted to assess the infrastructure, supplies, personnel and equipment, as well as functioning of the patient welfare committees, known as Rogi Kalyan Samitis, and the use of untied funds. Exit interviews with clients provide feedback on quality of care and services. This information is compiled to generate panchayat, block and district level report cards. The community inquiry process culminates in a Jan Samvad, a block level dialogue between community members and service providers. Report cards and specific instances of denial or poor quality of health services are shared at this forum. ऑपरेशन तो कर दिए, मगर कहते हैं क्या कि 70 रुपया दो, कहीं की रसीद दो 70 के, हम दे रहे हैं अभी, कहीं रसीद नहीं मिलता है, रसीद नहीं मिलता तो पैसा नहीं मिलता है. Key outcomes and decisions taken at the Jan Samvad are then collated to prepare the action plans. रोगी कल्याण समिति का जो बैठक हुआ उसमें सबसे पहला निर्णय लिया गया कि जो डॉक्टर लोग हैं वो अपना नेम प्लेट लगा लें कि कौन कौन डॉक्टर किस किस वक्त बैठते हैं और किस चीज़ के डॉक्टर हैं, और दूसरा ये है कि कौन कौन दवा यहाँ पर अवेलेबल है और कौन कौन नहीं है, और जो इमरजेंसी दवा है उसको ख़रीदा जाए. Even though CBPM is still at a nascent stage in Bihar, it has shown positive outcomes. जब हम लोग कार्यक्रम शुरू किए उस समय आशा भी उतने अपने काम के प्रति जवाबदेह नहीं थी, एनएम भी जवाबदेह नहीं थी. प्रशिक्षण के माध्यम से उनके अधिकार और उनका जो क्या कर्तव्य है समुदाय के प्रति उनको बताया गया. महादलित के लोग जो थी ना वो बैठक में नहीं आ पा रही थी, लेकिन हम लोग आंगनबाड़ी, आशा, एनएम दीदी भी आती हैं वो भी, और गांव के बीपीएमसी के सदस्य मिल कर के उनके घर तक गए और उनको घर से समझा कर के बैठक में लाने का कोशिश हम लोगों ने किया. लेकिन अभी वो लोगों में जागरूकता आ गया. हम लोग नज़र पड़ते ही जब ही देखती है कि गांव में आशा दीदी आ गई, एनएम दीदी आ गई, वो लोग पीछे से आ जाती है. पहले लोग का व्यू था कि लगता है कि अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं रहता है, लेकिन अभी है उसको ही विश्वास होगा कि अस्पताल में डॉक्टर हैं और अच्छे डॉक्टर वहाँ जाएंगे तो हमको 24 आवर सेवा मिलेगा. ग्रामीण एवं स्वच्छता समिति जो हमारे पास 76 है उसमें बहुत दयनीय स्थिति था कि उसमें पैसा ही नहीं खर्च होता था. 90% पैसे बचे हुए रहते थे पिछले 2 वर्ष से. बीपीएमसी का बैठक में ग्रामीण बैठक करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस मुक्त राशि से क्या किया जाए. तो बहादुरपुर पंचायत में हेमोग्लोबिन मीटर, आला मशीन और बीपी मशीन, वजन मशीन प्लस 2 दरी खरीदे गए.
कहीं कहीं पे अभी बदलाव आया है कि गांव के लोग योजना बना करके जिस दिन BHND होनी होती है, एएनएम दीदी को गांव में आना है, वो उनसे क्या करवा रहे हैं कि उनके सामान को वो साइकिल से लेकर के चले जाते हैं। हम अकेले नहीं समझा पा रहे थे गांव में, लेकिन जब VPMC के सदस्य लोग ट्रेनिंग लेके आए और जब बताएं गांव में पूरी बात को कि नहीं आप लोगों के लिए अच्छा चीज़ हो रहा है, आप लोग कीजिए, तब से हमें बहुत काम करने में सहयोग मिला। नाल काटने में 1-1 घंटा लोग छोड़ देते थे, नर्स लोग, अब नहीं काटते थे और कहते कि जब तक पैसा न देगी तब तक नहीं नाल काटेंगे। क्या करे, आदमी जब पैसा के ले जाता था एकदम अकबक में दे देता कि मेरा बच्चा के क्या हालत होगा, इसे पैसा दे देता था। यदि पैसा नहीं है तभी कर्ज लेके दे देता, लेकिन दे देता था। और जन संवाद के बाद अब जाते हैं तो न पैसा ही लगता है और न खेखेटा ही जाता है। रोगी कल्याण समिति से बहुत तरह के क्वेश्चन आने लगे कि मैडम हम लोग का समस्या नहीं सुना जाता है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और अभी जो डॉक्टर प्रभारी सब बैठे थे, मैं उसे वार्निंग दी कि अगर आप लोग इसकी पहल नहीं कीजिएगा, इस समस्या का समाधान नहीं कीजिएगा, इनकी बातों को नहीं सुनिएगा, तो आपके ऊपर कार्रवाई करने में मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। I think this is broad basing, going to the actual community, seeking them out, telling them what to expect from the services, and creating additional pressure on the health facilities so those kind of services can be provided. And I think we now are very clear based on the learnings of this pilot that yes, community monitoring is something that can be a very powerful tool. Our next step really is to make sure that community monitoring now is universalized. It happens in all states, it happens universally, it covers all facilities, and I know that this is a huge task and we really need to build capacities of the states, of the communities to take it up. You know, the community-based monitoring initiative is a very unique example of a successful relationship between government and a group of NGOs who are working together and then working with government, and both are making the effort to bring public back into public health and improve each other's understanding on how to take forward the public health agenda.